हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम विंडोज़ सर्वर 2016 को इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपना VMware वर्क स्टेशन ओपन कर लेता हूँ। देन होम स्क्रीन, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। हम यहाँ पर टेस्टिंग में VMware वर्क स्टेशन 15 पे करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है मैंने ISO फाइल। देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड यस। यहाँ पे मैं इस सर्वर को मैं बाद में एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनाऊंगा, तो मैंने इसका नेम चेंज कर देता हूँ AD सर्वर। एंड इसकी लोकेशन भी चेंज कर देता हूँ। लोकेशन मैंने D ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है VM के नाम से। इसी में मैं सारी VM मशीनें इसी के अंदर मूव करूँगा। DC सेलेक्ट कर दिया है मैंने DC। देन ओके एंड नेक्स्ट। ये हार्ड डिस्क का साइज़ यहाँ पे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इतने पे ही रखता हूँ। कस्टमाइज में हार्डवेयर कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको रैम बढ़ानी है, प्रोसेसर बढ़ाना है, इस तरीके मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। एंड फिनिश। ना ओके एंटर। इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एक एरर आ गई है। देन ओके। मैं इस वर्चुअल मशीन को एक बार ऑफ कर रहा हूँ। पावर ऑफ, ऑफ एंड एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। एंड ये फ्लॉपी डिस्क मेरी जो आ रखी है इसको मैं करता हूँ रिमूव एंड ओके। नाउ power on machine and press any key to continue. Then select next, install now. Here you can choose standard and data center. I choose data center for this demo environment. It's data center GUI mode and it's data center's command line interface. So I use desktop experience GUI। GUI में ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, फोल्डर आपको दिखेंगे बल और एंड कमांड लाइन इंटरफेस में ऑप्शन नहीं होता है इस टाइप का। सो आई सेलेक्ट GUI मोड एंड नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, accept term and condition. Next, here upgrade. If you already install server and you upgrade, then select this option. Here I install fresh windows, so I custom this option, select custom.
new, I apply and OK, because I have only 16 GB hard disk as I configure, uh, so I create only one drive and only C drive. and next, अब ये विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं इस विंडो को तब तक पॉज कर रहा हूँ। सो आई पॉज। अब मेरी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है एंड ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। Now I set administrator password. And finish. Unlock, control alt delete. सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। जब भी आप सर्वर को ओपन करते हो, सर्वर मैनेजर अपन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आता है। सर्वर मैनेजर, ये सर्वर मैनेजर हेडर है फॉर डैशबोर्ड and this is refresh and notification flag. This one is notification flag. This is manage option. You can click here, you can see add role, remove role, add server, create group, server property, server manager, data refresh 10 minutes. You can increase and reduce this time. And this option is don't show server manager automatically at logon. जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर मैनेजर ओपन होके आता है। अगर आप इसको चेक कर दोगे और ओके कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से ये सर्वर मैनेजर ओपन होके नहीं आएगा। तो मैं यहाँ कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड टूल इज़ एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स। इन दिस you can see everything, computer service, computer manage, disk, everything where is here. View for maximize, minimize, and help. This is dashboard. You can add role and feature, add server to manage and create a group. सर्वर का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लोकल सर्वर में आपको मिले, लोकल सर्वर में आपको सर्वर, कंप्यूटर नेम, ग्रुप, फायरवॉल, रिमोट, आप सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं ना, ऐसी ट्रिमिंग, ईथरनेट, एवरीथिंग। सो इस वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉलेशन सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।